In Noida, uh, Noida is totally divided into four parts. Zone number A, B, C and D. Zone A is coming in sector 50. There is two STP of first is 25 MLD and another of 34 MLD. Zone B having the another two STP in sector 54, 33 and 54. Zone C is having the one STP in sector 123. Zone D is having one STP in sector 168. Zone C and D, there is another proposal to extend the capacity. That's why in Zone C, another STP of 80 MLD is under construction, and in Zone D, another STP of 100 MLD is under construction to cater down the 2031 population sewage. Out of 6 STP working under the capacity of 231, presently treated 190 MLD, in which almost 50 or 60% bear reutilization of treated water for the greenery as well as firefighting, as well as pollution control in and around the roads, as well as to fill the ponds and the water area. Major consumption in golf course, stadium, botanical garden, in and around the road green area. We have now 4 or 6 ponds in which we are filling the treated water, which is giving the good aesthetic view of that area as well as increasing the groundwater level. Presently, Noida is the only one city which cattle the 100% sewer generation. Due to some damages in the old conventional line, conveyor line, there is deficiency of around 30 MLD, which very soon we will get out by repairing, and that water can be that sewage can be also treated by the sewage treatment plants. Out of these sewage treatment plants, upgradation of the SVR technology. SVR technology in the sewage treatment plant, there is two type of the treatments. First is inorganic treatments, which is compulsory for any technology which is happening in the primary units. Under the primary units, we are removing the floating particles of 20 MLD, mm as well as 6 mm, more than 6 mm and grits. After removing the inorganic loads, organic loads is coming to SBR tanks. SBR tanks means sequential batch reactors. One tanks having the 4 cycles. First cycle is filling, another cycle is aeration, thereafter settling, thereafter decanting. This continuous process 6 cycle or 8 cycle in a day happening every day. By 6 or 8 cycles, there is two type of the bioproducts coming. One is treated water, which we are utilization, another is sludge. At present, sludge we are storing in the nearby area. Very soon, Noida have the proposal to get converted in the manures. As everybody is knowing, Noida is purely urban area. We are far away from the farmer area. That's why end consumer of this manure is at present not available in Noida. But we are trying to get the combination with IFFCO, CRIPCO. They approaches us. They are very soon they are going to treat and package, so it can be supplied on the subsidiary rate to the farmer. In NCR, Noida is the only one city which is treating with the 100% capacity whatsoever is utilized generation as on today. In future also, by keeping the consideration of 2031, 80 MLD and 100 MLD, which is under construction, will come after 2 years. Again,
Noida is ensuring that after adding the population, added sewage can be generated 100%. As we are knowing, as per the norms, now NMCG, CPCB, NGT and Local Monitoring Committee UPPCB, they are monitoring weekly. UPCB, they are coming every weeks to check the outlet as well as STP performance. CPCB, they are coming twice in month to check every plants in the same fashion. NMCG, by surprising visits quarterly, they are checking the optimization use of the STP plants. In the same way, NGT, if any have litigation or public allegation, they are putting the some external agency to monitor on monthly basis of each and every plants. In last review by the CPCB and NMCG, Noida out of NCR declares 4 best plants of NCRs. Why? Volume. In which year it was, sir? In this year only, last year in 2020, by declaring consider the 5 points. One is optimization use of the sewage capacity, continuously giving the desired parameters. Fourth, presentation and cleanliness of the premises. Fifth, 24/7 carbon footprint immersion. As we are knowing कि any byproduct in the form of carbon, but here in Noida, by putting the combative unit, they are going to trap the H2S as well as methane. By converting this methane as a biofuels, they are using to generate the power also, which powers and reduction of the BOD loads is reducing the existing power load of the Noida STP. At present, we can say that in the same campus of the 54, 33 MLD, if taking the per month around 15 lakhs electric load, in the same rates in 15 or 16 lakhs 54 MLD by converting the combative treating the 54 MLD. In short, we can say here treated per MLD cost is around 0.36 and their treated is only 0.22 kVA electric load. Anything else? Sir, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, I want to understand from you, sir, that in Noida is actually well prepared as far as the sewage treatment plant is concerned, and it is also upgrading itself. New technologies are being used. I want to understand that authority is managing the sewage treatment plant. How it is different from the individual societies who have their own plants? How should they be prepared and how does it work? See, as per the norms, individual housing society, they should make the own sewage treatment plants. They should discharge the desired parameters. But presently, CPC, they have standardized its norms by putting N and P. They want to control over nitrogen and phosphorus also, which cannot be possible for the small projects. So, they are treating, if they are not using 100%, then again it is putting the pollution to the river, because whatever you can see in river, आप नदी में ग्रीनरी जो देखते हैं वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की उपलब्धता के वजह से होता है. समटाइम्स आप देखते हैं कि आपका अमोनिया बढ़ गया पानी में तो आप ट्रीटेड वाटर नहीं कर सकते. तो अमोनिया का बढ़ना और या फास्फोरस का बढ़ना ये छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स पे संभव नहीं है. छोटे ट्रीटमेंट प्लांट्स अगर हाउसिंग कॉलोनियाँ लगाती हैं तो उनको 100% वाटर को यूटिलाइज करना चाहिए. दे शुड नॉट discharge the treated water to the nearby sewage or in the pond area.
बट सर कुछ सोसाइटीज अभी इस तरीके से डिस्चार्ज कर रही हैं, तो उन सोसाइटीज के लिए क्या उन सोसाइटी में वाटर एजेंसी एज वेल एज ओएसडी साहब इंदू साहब विजिट करके जहां ऐसी पाई जाती है उनको फाइन किया जाता है। अभी लगभग 20 या 22 सोसाइटी को यूपीसीबी एंड नोएडा अथॉरिटी ने कंबाइंड एफर्ट करके उनको फाइन किया गया और दे हैव गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शन इवन योर ओसी कैन बी कैंसिल्ड इफ यू विल नॉट रन दी एसटीपी। एंड सर ये आपने अच्छी बात बताई कि ऑक्यूपेंसी भी कैंसिल करने के लिए अथॉरिटी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। अब हम ये बात करना चाहते हैं सर, जैसे अभी का जो सिस्टम है, अभी ये सिस्टम कितने साल तक और सस्टेन करेगा, मतलब कि इसको अपग्रेड करने कितने टाइम के बाद इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है? एक्चुअली हाउसिंग कॉलोनियाँ क्यों नहीं चलाती है इसका बेसिक रूट को हमें समझना पड़ेगा। व्हेन हाउसिंग कॉलोनी को जब ऑक्यूपेंसी या सोसाइटी बन जाती है तो उनको एसटीपी चलाना, उसके लिए इलेक्ट्रिक बिल देना और डिजायर पैरामीटर्स को मेंटेन करना ये मुश्किल है। वो सोसाइटी बेयरर जो हैं उसके लिए पे नहीं करते हैं, जिसके वजह से चलती नहीं है। नहीं चलने के वजह से वो पूरी की सीवर का रोड इसमें आ जाती है। वाइल कंसिडरिंग दी एसटीपी फॉर दी सिटी, they are not considering the load of the housing projects, because as per the guidelines they should make his own, they should treat 100%, they should use 100%, but at present unfortunately it's not happening. That's why that sewer is also coming in the sewage trunk line. तो 231 का जो डिजाइन है उसमें हाउसिंग कॉलोनियाँ नहीं पकड़ी गई है। 231 की जगह पे 190 आज ट्रीट होती है और लगभग 130 या 135 एमएलडी यूटिलाइज हो रही है, जो हमारा चैलेंज है कि 231 एमएलडी हम यहाँ पे भी यूज करें। रहा हाउसिंग की बात, अगर हाउसिंग वाले भी 100% यूटिलाइज करने लगे तो हमारा 231 का ट्रीटमेंट 231 पे ही कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन वो यूज 100% यूटिलाइज नहीं करते हैं। एंड ट्रीटेड वाटर सीपीसीबी के नॉर्म्स के हिसाब से 10-10 means BOD should be less than 10, TSS should be less than 10, COD should be less than 50 and NNP should be less than 5. ये चीज उनसे कंट्रोल नहीं होता है because they are not using the upgraded version of STP. Even they are not using the upgraded version of the STP as well as they are not utilizing the 100% treated water. Right. Why they are not utilizing? Because they are using the proper treatment, जिसके वजह से उनकी अपने गार्डन में पॉल्यूशन ना आए, चाहे गंदगी ना आए, इसलिए यूज नहीं करते हैं और वो वाटर को फिर से ट्रंक सीवर लाइन में फेंक देते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड ऑन कैपेसिटी ऑफ द सिटी। तो सर एग्जिस्टिंग में हाउ मच water is being treated by the Noida authority and what is the use of that water? I mean where all we use that water? सर आज के दिन में 231 में 190 mld की ट्रीटमेंट हो रही है। 190 mld के ट्रीटमेंट के बाद जो मेजर्स वी हैव टाई अप विथ NTPC ऑफ 30 crores पर एनम। नई गाइडलाइन के हिसाब से इफ एनी थर्मल प्लांट्स इज विद इन 50 kilometers they should use the treated water only. At present, Noida have the tie-up, they have done the MU with the NTPC. NTPC very soon, within 2 years, they are going to use the Noida treated water 80 mld and for that they have to pay 30 crores per annum. ये अगर आता है तो नोएडा का STP सेफ सस्टेनेबल हो जाएगी, अपने पानी बेच के ही ये STP का ऑपरेशन मेंटेनेंस होगा। रही दूसरी बात, एट प्रेजेंट टोटल ट्रीटेड वाटर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। फॉर दैट नोएडा पर्ची काटती है, पैसे बिल्डर पैसे जमा करते हैं और यू कैन फाइंड इन एवरीवेयर इन नोएडा ऑन रोड लॉट ऑफ टैंकर्स विथ द STP वाटर्स बोर्ड। एट प्रेजेंट अराउंड 400 tankers per day. 400 tankers into 10,000 means 4 lakhs water by tanker they are using in surrounding area. Major user are golf course,
stadium, 91 parks, all parks in the Noida area as well as botanical garden. इसके बाद अगला जो यूज है, जो कई पॉन्ड्स, झील्स बनाने जा रहे हैं, जहाँ की ये ट्रीटेड वाटर 54 में पीछे के साइड में अराउंड 9 mld का 9 mld की झील बनने जा रही है, जो पहले एक समय में यहाँ पे कचरा फेंका जाता था, जिसको हटाया गया और हटाने के बाद वो पॉन्ड नाउ वी आर गोइंग टू फिल विथ ट्रीटेड वाटर और इट विल बी पिकनिक प्लेस फॉर द पब्लिक. Oh, that's very nice, sir. Sir, is Noida also helping out places like Greater Noida for developing this kind of a STP system, because Noida already has very efficient STP system in place. Are you also helping developing places of Greater Noida, now they have 2-3 STP. As such, STP construction is very tedious and very planned job. Till STP, carrying of the sewer, drop of the sewer is very tedious work. आप जानते हैं कि किसी चीज़ों को लोअर पोजीशन पे पहुंचाना ग्रेविटी से बहुत आसान है, लेकिन आपकी टाइम टू टाइम आपकी पॉलिसी चेंज होने से हाई राइज, इंडस्ट्रियल एरिया, रोड एंड अदर्स कन्वर्सन, lot of governments and central projects are coming like metro and others. By giving this type of the lands, intermediate pumping station as well as MPS, mega pumping station के through बना के by in place of gravity line rising main से ये पूरी सीवर STP तक पहुंचाना पड़ता है. इसमें ग्रेटर नोएडा अभी काफ़ी हद तक, काफ़ी जब से नरेंद्र भूषण जी CEO आए हैं तब से इस पर काफ़ी काम होना चालू हो गया है और दे हैव अचीव्ड अराउंड 60% जो STP 30 mld पे चलती थी, नाउ दे हैव अचीव्ड अराउंड 60 to 65 mld. They have put another 20 and 15 mld in Ecotech 2 and 3. There they are using the 100% treated water. At present 20 mld Greater Noida on 7 mld and 15 mld on capacity 4 mld they are treating, and they are using 100% treated water in and around the area. Even they have put now norms to get utilized industrial purpose. They are not going to give the Ganga Jal, they will give the treated water between 11 o'clock to 2 o'clock. तो इन दी सेम वाटर लाइन जहाँ गंगा जल दिया जाता था, जिसको सेल्फ एक कॉस्ट है, उसके जगह पे ट्रीटेड वाटर 11 o'clock से 2 बजे के बीच में देंगे, ताकि लोगों को भी पता रहे कि ये जो पानी आ रही है ये हमारा सीवेज का ट्रीटेड वाटर है. सो वी हैव टू यूटिलाइज फॉर द गार्डनिंग एंड अदर्स पर्पस एंड वॉशिंग एंड फ्लशिंग पर्पस, नॉट फॉर द ड्रिंकिंग. Right. Thank you so Okay, much, thanks, sir. sir. Okay, बहुत अच्छे input